Welcome to this podcast. I'm Samita. And I'm Soham, and we'll be walking you through the transition from being a NEET aspirant to an MBBS student. First of all, congratulations. You have surpassed one of the Toughest exams in the country. The similarities in NEET and MBBS is that you do have to keep up your consistency and determination for your subjects, and Make sure you don't lag around them. You've worked so hard for 2 years to come to this level, and just a slight negligence shouldn't bring down those dreams that you have. one of the key things in MBBS is that you don't have to study a lot just to get the rank. Even minimal study can achieve you good marks. The key is efficient studies so that you don't work too hard for too long and just burn out. Yeah. Another huge difference is that you will get a chance to develop your non-academic skills as well in college, and you should definitely do not miss out on those chances. So कोई रहेगा नहीं अभी पढ़ाई करने के लिए, इसलिए प्रेशर भी उतना ही कम रहेगा. You'll finally enjoy your college life. ठीक है, अभी तक तुम इस केटल जैसे थे. So your NEET journey 2 साल में सिर्फ ये प्रेशर बढ़ाने के तक था. Now finally you're in the college. अब ये पूरा प्रेशर निकल रहा है. So that means you can finally relax and study without anyone to police around. MBBS में सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती है, बाकी इतने चीजें, having so many opportunities, you can discover them as well. And instead of studying the whole time, just finding an adequate level of studying along with developing other hobbies जो नीट में मर चुकी होगी, try to revive them again. 2 साल तड़प के पढ़ के अभी वो बैलेंस ढूंढने का वक्त आ चुका है बेसिकली. और कॉलेज अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है, इवन इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स वगैरह. ट्राई टू इन्वॉल्व इन दैट. The time to work on yourself. हाँ. ठीक है, फाइनली कॉलेज में लाइक एक बार क्लासेस हो जाते हैं तुम्हारे सारे, then you also get time, a lot of time, and best thing to do is you need to include gym in your activities. Work on yourself, mold yourself. So पढ़ाई के साथ साथ खुद भी मतलब डोले शोले बना के एकदम मस्त दिख सकते हो. One of the major attractions for any medical colleges is their fests. So college में obviously इतने सारे opportunities मिलेंगे. Just make sure you grab them with open arms. Involve करो, ठीक है, be parts of clubs so that पढ़ाई के साथ साथ इधर भी involved रहोगे. So given an example, in our college in JJ, we have multiple events. One of the major attractions being Kurukshetra, which is a sports event. You get to be part of many different sports, and just that's where you can shine. So along with that, you even have a cultural fest called as Astitva. So these are the times where you have opportunities to grow the other sides of yourself. Just make yourself popular in college. Talking about opportunities, I myself have played MUHS tournaments, basically university level tournaments. I'm a good chess player, and I definitely got my chance to shine there. And that's what you can do as well. I bet that made you popular. Another huge part of your MBBS journey that cannot be replaced are your friends. So in your first year, you'll have a huge herd. So, which will taper down by the years. But they are the people who will get you through the 5 years of MBBS, and make sure you never leave them. Exactly. So your friends are the people who will get you through both the tough times and the best times of MBBS. Example, एग्जाम के एक दिन रात जब पढ़ाई किसी से हो नहीं रही है, you'll be calling them to check on them कि हो रही है पढ़ाई, तेरी भी हो रही है पढ़ाई. So happy to hear that. प्रोफेसर्स के साथ साथ जो हमें और एग्जाम के थ्रू गाइड करेंगे वो हमारे सीनियर्स होंगे. सीनियर्स डू प्ले अ ह्यूज रोल इन एमबीबीएस. उनके बिना you'll not have any guide, you'll not have any ladder to show you the step to the next level. Exactly. प्रोफेसर्स इन एमबीबीएस कॉलेज भी लाइक प्रॉपर्ली बताते नहीं है कि एग्जाम्स वगैरह कैसे अरेंज होने वाले हैं. मेनी टाइम्स तो तुम एग्जाम में पहुंच के सरप्राइज हो जाते हो, शिट ये भी था, ये तो हमें बताया भी नहीं था. तो जो तुम्हें नीट में जो स्पून फीडिंग मिलता है, that's completely stopped now. So the people who kind of can give you some good advice are your seniors. So make sure you interact with them properly. Senior junior interaction as of medical colleges is very unique, which you won't find anywhere, which fosters a different kind of bond which you always will require throughout your journey. जब आप नीट से आते हो, लाइक हर लाइन एक एक लाइन रट्टा मारना, हाईलाइट करना,
MBBS में डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है. इतने सारे बुक्स है, हजारों पेजेस है रीड करने को और सब याद नहीं रहता. एंड इवन दो अगर तुम ये सब कर पाते हो, you'll not have time to eat or do anything else. एग्जैक्टली. फिर तो अगर ये सब करना पड़ा तो फिर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है to the amount where you're studying, make sure that is important and efficient. द राइट बैलेंस. ठीक है. कंसिडर योर सेल्फ लकी अगर तुम्हारा कॉलेज मुंबई और दिल्ली जैसे बड़ी सिटीज में है, बिकॉज इधर तुम्हें सिटी एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है. जो कंफ्यूज है कि तुम्हें हॉस्टल में भी रहने का चांस मिल रहा है और घर पे रहने का भी चांस मिल रहा है, तो कौन सा चूज करें? तो ऑलवेज चूज हॉस्टल में, क्योंकि एक बार जब तुम घर पे रहते हो तब तो पता चलता है कि हॉस्टल का वैल्यू क्या होता है. और हॉस्टल चूज करना चाहिए था. इवन दो यू माइट हैव द वर्स्ट फैसिलिटीज जो तुम सोचते हो, एंड घर का खाना तो बेटर होगा ही, बट द पीपल एंड द हॉस्टल एक्सपीरियंस इज नेवर गोना कम बैक इन योर लाइफ अगेन. ट्रूली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. MBBS का जर्नी आपको इन्फ्लुएंसर बनने का भी मौका देता है. ट्रस्ट मी गाइस, MBBS for everyone is a very fascinating experience. If you're interested to become an influencer or someone who likes to record themselves for social purposes, then make sure you use that opportunity. Sponsored by Muscle Blaze. For those who don't know, RX for balance. ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से, दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए.